Hi, you guys, welcome back to my channel. I'm Shreya and I bring real life lifestyle content which will help you to uplift your life every week. I wanted to create a Diwali look which is super affordable to everyone, and I have created this look right here using products under rupees 100. I know it sounds super crazy, so don't forget to watch this video till the end if you want to know कि मैंने कौन से products use किए हैं, कौन से brands है, क्या मेरे reviews है इस सब के बारे में. Let's get started with the makeup. We'll start by our OG moisturizer, which is this one. You can get this is the bigger one, but you can get this in a smaller size as well. And trust me, I use this moisturizer from I don't even know from how many years. Skin prep बहुत अच्छे से हो चुका है. Now we'll move ahead with the base layer, and for that I'm using the Lakme CC cream. Back then when I was in college, ऑलमोस्ट सब लोग ये सीसी या बीबी क्रीम यूज करते थे, एंड आफ्टर दैट पता नहीं क्या हुआ बट इसका क्रेज बहुत कम हो चुका है, एंड आई एम ऑल्सो यूजिंग दिस आफ्टर सो मेनी ईयर्स. इसका पैकेजिंग भी ओपन नहीं किया, सो आई एम टेकिंग दिस मच. इट इज डेफिनेटली नॉट माई शेड, सी, बट इसमें दो ही शेड्स है. इट इज टू वाइट, इज वेरी वाइट. सी, विल वर्क इट. ये सेटल हो जाता है इज व्हाट आई रिमेम्बर, बिकॉज मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई एंड सेंसिटिव है. मैंने ब्रांड्स भी ऐसे ही चूज करे हैं जो थोड़े नोन हो. डेफिनेटली नॉट माई शेड. So there were quite a few foundations on Nykaa under rupees 100, but I checked the reviews और उन सबके रिव्यूज काफी बुरे थे. किसी को ब्रेकआउट हो रहा था, किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो कुछ पिगमेंटेशन का इशू और ये सब. That's why I thought I should go ahead with the CC cream and Lakme one, which is the trusted, because I don't want to mess with my skin on this festive season. This one is Blue Heaven Get Bright Compact. Not sure about anything. Nice packaging, so it's काफी decent, and it has mirror. Oh, okay. काफी बेटर है बिकॉज सीसी क्रीम ने जो भी मेरा फेस वाइट कर दिया था, फुल वाइट, इससे काफी बेटर हो गया है. वी ऑल्सो हैव eyeshadow, and it's not just one eyeshadow. We have a whole eyeshadow palette. This one is from Glam 21. Using this again for the first time. I'm quite excited about the colors. These are the shades. और नायका मुझे कुछ 120 में मिला था. आई नो 20 रुपीज एक्स्ट्रा है, पर 120 में फुल पैलेट मिल रही है. एंड ऑल्सो दे हैव सो मेनी डिफरेंट शेड्स अवेलेबल, सो डू चेक इट आउट. लेट्स स्टार्ट विद दिस वन विच इज द न्यूट्रल शेड. तो मेरे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है नहीं इस पैलेट को लेके. जो प्राइस पॉइंट पे ये सब मिला है ना मुझे, इट्स स्टील. ट्राई द शिमर वन. ओ नाइस, नॉट बैड. प्राइस पॉइंट पे जो भी आ रहा है ये, ओ nice. Nice. I'm thinking about doing this green one. I know I'm wearing pink, but anyway, this is an experimental video, so हो जाए सब कुछ experiments. Anyway, nice. I don't know ये कैमरा में कैसे लग रहा है, but it is a very good peacock green में है. It's nice. Honestly, 120 rupees में if you're getting 9 colors with shimmer and with matte eyeshadows, it's crazy. ये थोड़ा डार्क हो गया है. I'll fix this up. This one is from Elle. ये मैंने पहले भी यूज किया हुआ है. It's not new. काफी अच्छा है, निकलता नहीं है बहुत. एक ही इशू है, इसको ड्राई होने में काफी टाइम लगता है, लाइक 5-7 minutes you have to wait. हमारे आईज बहुत अच्छे से हो चुका है. We are going to use blush now. This is from inside cosmatics. This is a cream blush. I thought it's a powder brush. मैंने already compact लगा दिया था. Ooh, look at the pigment. मैंने आई थिंक ज्यादा लगा दिया है. ये काफी ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा पिगमेंटेड भी है. नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस वन एट ऑल. इसका प्राइस क्या है? एमआरपी 160 है, बट आई एम श्योर ये मुझे काफी सस्ता मिला है उससे. सी, ओ माय गॉड, दैट्स व्हाई आई लाइक डूइंग दीज काइंड ऑफ वीडियोस. अदरवाइज मैं कभी इनसाइड कॉस्मेटिक्स का, आई मीन नो हेट टू द ब्रांड, बट हमें बहुत आदत हो चुकी होती है एक पर्टिकुलर ब्रांड से चीजें खरीदने की. श्योर ये विदाउट मेकअप बेयर स्किन पे भी बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज इट्स रियली सॉफ्ट एंड बटरी. For lipstick, I have two options here. One is from Blue Heaven Get Matte Lipstick. Another one is Elle. This is liquid matte, but I'm going to use this one. Nice. But काफी अच्छा न्यूड कलर है ये. मैंने पहले काफी सारी न्यूड लिपस्टिक्स खरीदी हुई है, बट
This is a very good lip color. Satin, like soft hair, is again from Inside Cosmetics. This is the lip gloss. It's a clear lip gloss. Gloss तो अच्छा है, but this is slightly sticky. Like thoda you can feel the stickiness on your lips. If you're good with it, you can definitely go ahead and buy it. Not to forget, this is a makeup fixer by Swiss Beauty. It's my third bottle. I know it's not under rupees 100. It is somewhere around 230, 240, in that price range. But this is a very good makeup fixer at this price. So definitely you can go ahead and try this one. If you don't want to use a makeup fixer, you can definitely skip this. It's your option. But personally, I love to use fixers. So yeah, let it dry for a minute. So this is my final look. I'm literally amazed by all the products. मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने कम प्राइस में मुझे इतने अच्छे products मिलेंगे. It's really looking nice. And if you also want to create your makeup look using these products, please go ahead and do that. And don't forget to let me know. Happy Diwali to you all. Thank you so much for watching my video. Bye bye.